Good afternoon, students, and welcome to the online lecture of Sharad B. More English School. Okay, now practice set 41, question number 5. Fill in the blanks in the table. Okay, now here the table is given and some space is left there. Okay, means principal amount, rate of interest, time is given, and interest and amount you have to find, right? So let us solve this question. Okay, we have to use the formula of interest here. That's very simple, and total amount formula. Okay, so okay. Now, first question. Principal amount is 4,200, means 4,200. Rate of interest 7%. Time is 3 years, and we have to find the interest and amount. Okay. So now let's solve it. Okay. Now look here. The principal amount is 4,200. Then rate of interest is 7%, and time period is 3 years. Okay, we have to find the interest and total amount. So formula for interest is P into R into T upon 100. Okay, now we'll substitute the values. Value of principal amount is 4,200. Rate of interest R, rate of interest is 7. Then T is 3 years, time period is 3 years, and then divided by 100. Okay, now 20 and 20 will get cancelled, present in denominator as well as in numerator, right? So the remaining terms we will multiply. 42 into 7 into 3. 42 into 7. Okay, so now here it is 42 into 7 into 3 is 21. 7 3 is 21. Now we will multiply 42 into 21. Okay. So now when we will multiply 42 and 21, we will get the amount of interest. Now let's multiply 42 into 21. 2 ones are 2, 4 ones are 4, 0. 2 twos are 4, 4 twos are 8. So now we will add it. Okay. Now 2 plus 0, 2. 4 plus 4, 8. And then 8. So it means amount of interest is 882. Okay. Final amount 882. So now we have to find the total amount. So now formula for total amount is what? Principal amount plus interest, right? So here we will write the formula. Okay. Principal plus interest. Okay. So principal amount is 4,200 and interest amount is 882. So when we will add it, so what we'll get? 2 zeros, 2, 8 plus 0, 8, 8 plus 2, 10, 0, 1 carry, so 5, 4 plus 1, 5. 5,082. Total amount is 5,082 rupees. It means जो आपको स्पेस गिवन है ना, ब्लैंक स्पेस, उसमें आपको इंटरेस्ट के जगह पे क्या लिखना है? 882. एंड देन टोटल अमाउंट के प्लेस पे आप लिखोगे 5,082. ओके, गॉट इट? नाउ लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन. Second, principal amount is left over here, right? Means principal amount नहीं given है आपको. आपको rate of interest time given है 4 years, interest given है. आपको find क्या करना पड़ेगा? Principal amount and then total amount. So again we will use the formula of interest, और उस formula में हम लोग जो given है interest value, time, rate of interest को substitute करेंगे and then principal amount calculate करेंगे. Okay. So now let's solve the second question. Okay. Now let's solve the second question.
Rate of interest is given as 6%, time is given as 4 years, interest value is given as 1200. We have to find the amount of principal, right? Principal amount and total amount. So now let's write down the formula of interest, that is P into R into T upon 100. Okay. Now I की value given है आपको, right? Interest value given है, so here we will substitute it. Okay, 1200. Then principal amount नहीं given है, so P को as it is रखना है. Rate of interest 6 है, time है 4 years, right? So instead of 4 time we will write 4 and the denominator में 100. Now we will cross multiply 100, right? 100 को आप shift करोगे left side पे तो ये divide से क्या हो जाएगा, multiply, right? So it will become 1200 into 100 is equals to P into 6 into 4. Okay, now P as it is रहेगा 6 4 जा 24, right? P into 24. नाउ आपको फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है, तो 24 का आपको शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे, राइट? सो हियर इट विल बिकम P इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया. सो हियर वी विल राइट 1200 into 100 upon 24. Now 24 and 1200 can be cancelled by the table of 12, right? Now 12 ones are 12, 0 0 as it is. 12 ones are 12, 0 0 as it is. 12 twos are 24. Okay. Now 2 ones are 2, 2 fives are 10, 0 as it is, right? Now so we will multiply 50 into 100. So we will get the principal amount. ऐसा वाला एक फोल्डर कर रखा था मेरा, वो कहाँ है? पुराना में यहाँ रखा था. Okay, now so final answer what we got here, 500 into 50 into 100. Okay, so 50 और 100 हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, so हम लोग को प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा. Okay, so 50 into 100 is 5000, right? So principal amount is 5000. Now we have to find the total amount, right? तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट अमाउंट क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ओके, सो टोटल अमाउंट इज प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, राइट? सो जो प्रिंसिपल अमाउंट मिला है वो हम लोग को क्या मिला है, 5000, राइट? उसमें हम लोग इंटरेस्ट वैल्यू ऐड करेंगे. ओके, सो हियर इन दिस स्पेस प्रिंसिपल अमाउंट की स्पेस में हम लोग क्या लिखेंगे, 5000. ओके, एंड टोटल अमाउंट विल बी 5000 प्लस 1200, तो क्या हो जाएगा ये 6200. ओके, so total amount is 6200, principal amount is 5000. okay, now look here, third question में आपको principal amount given है, rate of interest given है and interest value given है, आपको time find करना है. okay, and then total amount find करना है. so again we will use the same formula. okay, so principal amount is 8000, rate of interest is 5%, and interest value is 800. We have to find the time, that is number of years, and we have to find the total amount. okay, total amount, that is it. Okay, now formula for interest is equals to P into R into T upon 100. okay, now substitute in 800 in place of I. P principal value is given as 8000, rate of interest is given as 5%, and T, that is number of years we have to find, so we'll keep it as it is. okay, then 100 आप क्या करोगे, 800 के पास शिफ्ट करोगे, so divide से multiply हो जाएगा. okay, so here 800 into 100
is equals to 8000 into 5 into t. ओके नाउ आपको t की वैल्यू फाइंड करना है, तो 8000 और 5 दोनों भी आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दोगे, तो मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो हियर विल राइट 800 into 100 अपॉन 8000 into 5. Okay, now this 2 0 will get cancelled. This 1 0 will get cancelled. 8 ones are 8, 8 ones are 8, 0 as it is. 5 ones are 5, 5 twos are 10. So it means t is equals to 2 multiplied by 1. So here t, that is time period, is what, 2 years. Okay, got it. Then नेक्स्ट आपको फाइंड क्या करना है, टोटल अमाउंट. सो इट्स वेरी सिंपल. आप क्या करोगे, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस interest amount, right? So principal amount is 8000, amount of interest is 800. So 8000 plus 800 is what, 8800 rupees. Okay, so your number of years t is 2 years, total amount is 8800. Okay, next question. Question number 4. Here principal amount is not given, but rate of interest is given and interest is given and total amount is given. आपको टाइम वैल्यू फाइंड करना है. नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे आपको अमाउंट टोटल गिवन है और इंटरेस्ट अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है और टाइम फाइंड करना है. सो इट्स वेरी सिंपल. आप क्या करोगे, पहले टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट यूज करके प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करोगे. ओके, देन प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट को यूज करके आप टाइम फाइंड करोगे. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट. Okay, rate of interest is 5%, interest is 6000, total amount is equals to 18000. So first we'll find out the principal amount. तो आप क्या करोगे, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला यूज करोगे. सो राइट हियर टोटल अमाउंट is equals to principal amount plus interest amount. Now we have to find, now we'll substitute the values. Total amount is 18000, principal amount find करना है, so as it is रखो, interest is 6000. ओके, अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, 6000 को 18000 के पास शिफ्ट करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस. सो 18000 माइनस 6000 इज व्हाट, 12000. देयरफॉर पी की वैल्यू क्या मिली आपको, प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू 12,000 rupees. Okay, principal amount is 12,000. Now we have to find the time period, number of years. Okay, so we'll use the formula of interest. I is equals to P into R into T upon 100. Okay, so now we'll substitute what is given to us. Interest amount is what, 6000. Principal amount अभी हम लोग ने find करे 12,000. Rate of interest is 5%. Then t आपको फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे t एज इट इज लिखोगे, डिवाइडेड बाय 100. ओके, अब t की वैल्यू फाइंड करना है, डिनोमिनेटर में 100 है तो शिफ्ट कर दो पहले लेफ्ट साइड पे, तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इट विल बिकम 6000 into 100. एंड देन ये 12000 और 5 को आप क्या करोगे, शिफ्ट करोगे लेफ्ट साइड पे, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में. ओके, नाउ दिस 2 0 एंड दिस 2 0 विल गेट कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 2 12, 0 0 as it is. Okay, now remaining is 2 and 5 and then 100. अब ये 100 से भी आप 2 को कैंसिल कर सकते हो, राइट. 2 को 100 को 2 से कैंसिल कर सकते हो. 2 5 are 10, 0 0, राइट. 5 1 are 5, 0 as it is. Means time, that is number of year is what, 10 years. Okay, आपको टाइम पीरियड क्या मिला, 10 years. Okay, अब प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 rupees. Okay, next question. लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5 में लास्ट पार्ट क्या गिवन है आपको, प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट गिवन हियर. आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% मीन्स 2.5, राइट. देन 5 years गिवन है टाइम, इंटरेस्ट अमाउंट गिवन है 2400. सबसे पहले आप प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करोगे. ओके,
देन आप टोटल अमाउंट फाइंड करोगे. ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, फिफ्थ वन. Okay, rate of interest is 2.5%. Then time is 5 years and interest amount is 2400. First of all we have to find the principal amount, right? So interest का formula use करेंगे, P into R into T upon 100. Now substitute the values. I is 2400, P find करना है, keep it as it is. R की value given है 2.5 means 2.5, T की value given है 5, then upon 100. अब आपको P की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये सारी वैल्यू शिफ्ट करोगे तो जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में वो मल्टीप्लाई. So 100 is here is in denominator, it will come in the numerator to the left side. 2.5 into 5 will become divide. Okay, now let's solve it. So P is equals to, अब देखो आप 5 से कैंसिल कर सकते हैं 100 को, 5 1 5, 5 2 10, 0 as it is, right? So what you got here, 2400 into 20, right, upon 2.5. नाउ लुक हियर, आपको ये जो 2.5 में जो डेसिमल है वो हटाना है, राइट? तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल हट जाएगा. जब डिनोमिनेटर में करोगे तो न्यूमरेटर में भी करना कंपल्सरी है, राइट? सो हियर 2400 मल्टीप्लाई बाय 20 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 200. 2.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 25. नाउ 25 1 25, 25 8 200, right? So now remaining terms 2400 and 8. So principal amount is 2400 multiplied by 8. So now multiply and get the value. 8 zeros are 0, 8 zeros are 0, 8 4s are 32. 2 you will write here, 3 carry. 8 2s are 16 plus 3, 19. So principal amount is equals to 19,200, right? We got the principal amount. Now we have to find the total amount, right? So total amount is principal plus interest, right? So 19,000 plus 19,200 plus 2,400, right? 19,200 plus 2,400. So जब आप add करोगे 19,200 में 2,400, so you will get 21,600. Okay, so you will get 21,600. Got it? So here we got the final answer, principal amount as well as total, and the practice set is completed.